Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. As you all know that my name is Nagin Arshad and the subject I'm going to teach you is chemistry. So here are the outlines of chapter number 1. We have already discussed outline number 1, that is tissue and its introduction, and then second outline concept of mole, we have already discussed this as well. And then uh, in the last lecture we did discuss Avogadro's number and stoichiometric calculations. So again, our today's topic is about Avogadro's number and stoichiometric calculations. Actually, we are going to discuss the concept of molar volume today. So here we go. So dear students, once again I'm going to make you revise the concept of molar volume, that 1 mole of any gas at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube volume, and because it is the volume occupied by 1 mole of a gas, therefore it is termed as molar volume. Then we did discuss in the previous lecture as well that the values for the standard temperature and pressure for gases is 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm. यानी जब आप लोगों से बात की जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की इन केस ऑफ गैसेस, तो यू शुड नो दैट the value for the standard temperature is 0 degree Celsius and for pressure is 1 atm. Now coming towards examples, we did discuss the example that if we are talking about hydrogen gas, then the molar volume of hydrogen gas is 2 grams per mole. If you represent this in grams only, then it will be equal to 1 mole of that gas. And 1 mole of any substance contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles. So in this case, we will get 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. And because it is 1 mole of any gas, so these number of particles will occupy the volume 22.414 decimeter cube. Same is the case for oxygen. Here is a molar mass of oxygen 32 grams per mole. If you represent it in terms of grams, then it will be equal to its 1 mole. Again, you will get 6.02 into 10 raised per 23 molecules of oxygen gas, and these molecules will occupy 22.414 decimeter cube volume. So you have to remember over here that whatever gas you are talking about, if you have 1 mole of that gas at standard temperature and pressure, then it will always occupy 22.414 decimeter cube volume. And what happens if you have 2 moles of a gas? Then obviously it will occupy the volume 2 into 22.414 decimeter cube. So as you will increase the number of moles, the volume occupies will also be increased in the same proportion. Means अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तो 22.414 decimeter cube volume occupy होगा. And if you talk about 2 moles, then 2 into 22.414 decimeter cube. If you have 3 moles of a gas, then the volume occupied will be 3 into 22.414 decimeter cube, and so on. So this was all about revision. Now today we are going to see different statements from your textbook regarding the concept, that what sort of statements are given in the exam. So let's have a look. This is sample problem number 1.4 from your textbook. It says determine the volume that 2.5 moles of chlorine molecules occupy at standard temperature and pressure. So beta, here you are given number of moles and you have to find the volume. You can use a unity method. आपको सबसे पहले इस रिलेशन का पता होना चाहिए कि 1 mole of any gas at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube volume. तो ये रिलेशन है, आपने याद रखना है. Now using this particular relationship and using the unity method, by applying the unity method, you can find an answer. You will say that if 1 mole of chlorine at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube volume, तो 2.5 मोल्स क्लोरीन के कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 22.414 इंटू 2.5, एंड हेंस यू विल गेट एन आंसर 56.035 decimeter cube volume. Now here is self check exercise 1.2. Here the statement says how many moles of oxygen molecules are there in 50 decimeter cube of oxygen gas at standard temperature and pressure. तो लास्ट स्टेटमेंट में यू वर गिवन नंबर ऑफ मोल्स एंड यू हैड टू फाइंड द वॉल्यूम.
Here you are provided with the volume and you have to calculate the number of moles. Again, you can use the same relationship that 1 mole of any gas at standard temperature and pressure occupies 22.414 decimeter cube volume. So this is the application of the concept what you have learned as the molar volume. ठीक है, तो ये statements उसकी एप्लीकेशन है कि आप लोगों को अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपने कैसे उसको परसीव करना है एंड हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट. तो यहाँ पर आप सेम यूनिटी मेथड यूज़ करेंगे, बस इन्वर्ट कर देंगे उस सीक्वेंस को जो आपने पीछे रखा था. याद रखें यूनिटी मेथड में जिस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है उसको आप राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे रखते हैं. यानी अब अभी इस टाइम पर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो यू विल राइट इट एज 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज़ ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस. Then 50 decimeter cube volume is occupied by chlorine at standard temperature and pressure is equal to 1 divided by 22.414 into 50. इस sequence को ज़रा याद रख लें. This is the sequence that you use in unity method and here you will get an answer 2.23 moles. Now here is a very important short question regarding paper point of view. ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाने वाली स्टेटमेंट है that how many molecules of water are there in 12 grams of ice. So data में you are given the mass of water that is 12 grams and you can calculate the molar mass of water uh, as I have calculated over here and it comes out to be 18 grams per mole. छोटी छोटी चीज़ों को आपने याद रखना होता है कि गिवन मैस को हमेशा आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, मोलर मैस को ऑलवेज़ आप एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स पर मोल. और अगर कहीं पर टर्म लिखी हुई आ जाती है मोलेकुलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस जिसको आप कहते हैं, तो आप उसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट AMU. सो फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. अच्छा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स लास्ट 2 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स इट इंक्लूड्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूला यूनिट्स. तो पार्टिकल्स में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट. तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फॉर्मूला जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू फाइंड द नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयंस एंड नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स. सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 6.02 इंटू 10⁻23. तो वो तो हमारे पास है, बट नंबर ऑफ़ मोल्स आर नॉट गिवन. सो यू कैन यूज़ द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड इट इज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस. तो मैंने मोल्स की जगह उसका फार्मूला यहाँ पर पुट किया है एंड देन आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज़ in this relationship in this formula and you will get an answer 4.01 into 10⁻23. So these are the number of molecules of water in 12 grams of ice. So dear students, that was all for today. Here is an activity given to you people that what volume does 0.80 moles of nitrogen gas occupy at standard temperature and pressure. So here in this statement you are given number of moles and you have to calculate the volume that the gas will occupy at standard temperature and pressure. This is pretty much similar to the first two examples that I have discussed in this lecture. So solve this activity and update me with your feedback. Thank you so much. Stay blessed, stay safe.